यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, राइट, चाहे आपके कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, देयर हैव ऑलवेज बीन केसेस ऑफ प्लेजरिज्म, ऑलराइट, एंड ये स्टूडेंट से शुरू होकर स्कॉलर्स तक ये प्लेजरिज्म के जो प्लेग है वो फैले हुए हैं, ऑलराइट। तो हम ये इसको कहाँ से ठीक करना है, ये जो प्लेजरिज्म का जो जड़ होते हैं उसको हम कहाँ से उसको उखाड़ना होता है। एक्चुअली ये हमको स्कूल टाइम से ही उखाड़ना होता है, जब छोटे छोटे बच्चों को हम एनकरेज करते हैं आंसर्स लिखने का या इंटरनेट से मटेरियल ढूंढने का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ वी शुड बी ओरिएंटिंग चिल्ड्रन, not to indulge in plagiarism, not to indulge in unethical practices. लेकिन ये ज्यादातर academic space में ही हो पाता है, such kind of corrective measures. So मेरा ये कोशिश है today that I focus more on writing part. Nonetheless, we need to first of all define what is ethics. All right, what is ethics in research? So I have, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे स्लाइड में आप देखिए, right? अब मैंने देखो ये मेरा शब्द नहीं है, इतने अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े जो डेफिनेशन है, such kind of refined definition, ये मेरा अपना शब्द नहीं है. These are not my words. So I cannot present these words as though they are my word and pretend to be intellectual here. I am not, all right? I am just a student and I have read this particular essay by David Resnick. So David Resnick का ये essay, ये जो article है, उसमें मैंने पढ़ा, I mean, there are many definitions of ethics. मैंने बस I just happen to refer to David Resnick. बहुत सारे definitions है ethics का and ethics in research का. All right. So what is ethics? Ethics are actually norms for conduct. So he's not talking about research here. He's talking about general ethics, ethical issues in life per se. So ethics are norms for conduct. मतलब जिस तरीके से हम behave करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं. So conduct that distinguish between acceptable and unacceptable behavior. जो अच्छे है, like what you will call as correct and incorrect जो हम बोलते हैं, और इसको distinguish करने के लिए एक particular norm होते हैं, right? So this is what we understand as ethics. Now, why do we talk about ethics in research? Agar, so there are this unethical practice called plagiarism is so deep rooted and it's so pervasive. मतलब इतने फैले हुए हैं कि unethical practice जो है, चाहे वो आपकी data collection में हो, चाहे आपको वो research में हो, या आपकी academic writing में हो, चाहे आपकी patenting में हो, alright, innovation में हो. So various organizations, institutions, alright, they have come up with their own ethical codes. So उनका अपना हर एक institution का अपना ethical codes होते हैं. All right. So, like for example, अगर आपको कोई journal में publish करते हैं, इनका अपना ethical codes है. All right. So, if we comply with these norms, so ये एक norm होते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है. These are the things that we need to follow. These are the things. This is how we need to quote. Right. These are certain norms. So, when we comply with these ethical codes, it minimizes, all right, it minimizes, to quote Resnick here, fabricating, falsifying or misrepresenting research data. All right. So हम जब ethical codes को हम अपने एक what you call, when we adopt ethical codes as part of our research, as part of our own personality, then there is no question of fabricating your data. मतलब आप ऐसे ही, मतलब for example, if a pharmaceutical company wants to discredit a vaccine company, let's say, all right, तो एक ऐसे ही कोई false research निकाल के the pharmaceutical company might just publish some article, all right, by fabricating data. Yeah, by misrepresenting data. Now that is unethical practice. So there are several other examples like that, though I'll not have that kind of time to discuss all. All right. Next is what happens, what are the gains of complying with ethical conduct in research. जब हम अपने research में ये जो ethical codes होते हैं, alright, जब हम उसको follow करते हैं, जब हम उसको comply करते हैं, तो इसमें हमारे क्या नुकसान और हमारे क्या benefit है. अब उसमें हमारे benefit ही benefit है, कोई नुकसान नहीं है. देखो, short research में कोई shortcut नहीं होते.
It's like, you know, simple thing. आप अपने life में ही देख लो, अपने friend circle में ही आप लोग देख लीजिएगा. All right. Now, if you never keep your word, if you do not, fulfill your commitments, if you always keep telling lies, all right, yeah, if you happen to kind of, misuse others property, others things, तो आप अपने friend circle के बीच में आप जो है discredit हो जाएंगे. All right, and you will not be considered as a reliable person, or you will not be considered as a person with integrity. You get me, right? So research jo hai, the kind of research that we do, it also reflects the kind of person that we are. All right, it is not only about reflecting your own academic excellence, your academic potential. It is also about your integrity, कि आप किस तरीके के इंसान हो, वो आपकी रिसर्च में दिखाई देते हैं, right? So particularly देखो आपके जैसे for example sciences में है आपके, या other disciplines में, where you have collaborative research. Sciences में labs में collaborative research करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिलके. Now if you do not trust each other, all right, how can you be pursuing your research? How can you promote your research? So if we follow ethical norms, not only does it save you from, the charges of fabrication, falsifying, or misrepresenting data, but it also promotes a certain trust factor, a certain mutual respect or accountability, in the words of Resnick here. All right, I hope I am clear so far, students. अभी तक आप लोगों को मेरे कोशिश जो है bilingual में deliver करने की, I hope you've been able to understand so far. All right, so now let me proceed. I'd like to request Richa, in case if I overshoot my allotted time, आप please मुझे बिल्कुल remind करिएगा. एक पैशन में फ्लो होते जाते हैं. टीचर्स का यही तो प्रॉब्लम है लाइफ में, जो पढ़ाना शुरू होते हैं वो खत्म ही नहीं होते हैं. Alright, anyway, so okay, so I come to the next slide here. So the next slide is again a take from David Resnick. So David Resnick जो है, इन्होंने, he has outlined some what you call principles here. He mentioned that there are so many institutions and agencies and organizations that have come up with their specific ethical codes and guidelines. And each institution will have their own different guidelines. तरह तरह के होंगे इनकी अपने guidelines. However, some of the things, overlapping things, या common principles are honesty, objectivity, integrity, transparency, accountability, confidentiality. Now जब हम honesty की बात करते हैं, like honesty और research से क्या लेना देना? भाई research तो भाई आप अपना data collect कर लो और अपना जो भी है library work कर लो और आप उसको analyze कर डालो, बात खत्म. ऐसा नहीं होता है, right? So honesty here refers to, honesty in, आपने मान लो data research, आपने जैसे सोचा था उस तरीके का आपको data नहीं मिला. आपको लगा कि आप, when you go to the field for some kind of data collection, आप कुछ और सोच के जाते हैं और आपका data collection कुछ और होते हैं. But that doesn't mean that you will manipulate that data to serve your ends. All right, or to prove yourself right. So honesty here means honesty in the context of, in the context of presenting your data, honesty in the context of what you call using all the data that you've collected and not being selective. All right, so he talks about honesty in that context. Objectivity. Now objectivity is very important. Now again let me share, objectivity जो है ये ज़्यादातर अक्सर जो है ये ethnographic research में भी applicable होते हैं. Let's say we have a certain misconception about people from Northeast India. All right, and because you have a certain, let's say, stereotyped notion about people from Northeast India, let's say particularly about women from Northeast India, क्योंकि मान लो आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है, आपके और कोई Northeast friend के साथ, तो आपको, let's say, you've decided कि सारे Northeast वाले ऐसे ही होते हैं. All right, now that is your personal opinion.
Now that doesn't mean that जब आप अपने ethnographic research के लिए जब नॉर्थ ईस्ट की कोई भी स्टेट में जब जाते हो, you cannot be guided by your personal experience. You cannot let your objectivity be clouded by your personal experience. So objectivity मतलब आप अपने जो data है, आप अपने analysis में objectivity लाने की आप कोशिश करेंगे. All right, that is the second point Resnick talks about. The third point, of course, is integrity. Now, integrity एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात होती है जब हम अपने identity, अपने personality जब build करते हैं और define करने की कोशिश करते हैं, तो integrity जो है वो बहुत important होते हैं. All right. So, who is a person with integrity? A person with integrity is someone who can claim that that person will always follow his or her promises and will always fulfill his or her commitments, and that he or she will always be truthful. Right. So that is what we talk about integrity. All right. So integrity in research then would be, अब जिस तरीके से आपने सोचा है, आपने मान लो for example आपने अपने collaborator के साथ research किया है, तो let's say for example if you have made certain agreements, then you have to fulfill those agreements and promises. That is how we relate integrity to research. All right. Next is transparency. Transparency would mean, let's say you are funded by a particular organization, और आपको पैसा दिया गया है उसके लिए, and आपको बोला है data collect करने के लिए ताकि वो research में और उसको इस्तेमाल कर सके. So transparency means transparency in again in showing your experimental designs, transparency in the way that you've used your data, transparency, there has to be transparency in sharing your data. Like if somebody wants the data from you, all right, that person can seek that data from you. All right, now it's a different thing कि वो person उसको misuse करेंगे तो उसको हम कैसे prevent किया जाता है. That's a different discussion. All right, I mean, like that is another level of solving that issue. All right, but transparency, the code of transparency entitles a person to seek for a data or information, let's say be it the funding agency itself. All right, so there should be transparency in the way that the method that you've used, आपने किस तरीके से उसको डिजाइन किया है, एक्सपेरिमेंट को आपने इसको कैसे what you call analyze किया है, ये सब आपको शेयर करने की जरूरत है. Accountability. Now, accountability is very important, and I feel that I come from English discipline में literature पढ़ाती हूँ, all right, and literature में तो शब्दों के बहुत weightage होते हैं, right, and हमको लगता है like for example because I'm an English teacher, I'm a teacher of literature, मेरे लिए तो particularly और मेरे discipline के लिए तो particularly एक शब्द के लिए आप accountable है. And this is very applicable to life also. Like, आप अपने life में you cannot make politically incorrect statement. You cannot just say कि सारे जो है सारे South Indian जो है ऐसे होते हैं, या सारे कश्मीरी ऐसे होते हैं, या सारे North East वाले ऐसे होते हैं. You cannot make such kind of remarks. आप research को छोड़िए, research के बाहर भी आके आप देखिए, you cannot make such kind of remarks. You cannot make such kind of sweeping statements. That will be very wrong on your part. All right. So accountability here means आप एक शब्द के लिए, इसीलिए हर आए दिन there are a lot of issues because of certain particularly media में report होते हैं because of a certain what you call false statement being made, or very unpolitically correct statements that are being made. So you have to be accountable for your own statement. आपका एक शब्द को आपको own करना पड़ेगा. You have to treat your words and sentences and your research like your own precious property, and you have to be able to justify them. You have to be able to explain आपने एक particular शब्द use किया तो आपने किस लिए use किया, that you have to explain. So research में भी वैसे ही है, like the kind of information that you've supplied or the kind of words that you've used, you have to be accountable for all of them. And finally, I come to confidentiality. Now, Resnick talks about a lot of other things. बहुत सारे इन्होंने principles इन्होंने outline किया है. I have just picked 6 most relevant what you call principles here. So जब confidentiality की बात आती है, like particularly when you go to conduct
interviews, जब आप interviews के लिए जाते हैं, there are certain private matters that the subject may not want the interviewer to share with the public. So you have to have that, you have to observe that code of privacy and confidentiality. So you have to observe that. All right. So that is the meaning here. Okay. So I hope I have been able to make myself understood so far. All right. So I now take you, अभी तक मैं क्या कह रही थी? अभी तक मैं I have been talking about ethical research in ethics in research, all right, and particularly in the context of data collection, all right. But now I come to the academic writing part. All right. Now, this is just to kind of, you can say, just to represent how plagiarism will look like in terms of a visual manifestation. जब आप किसी के idea चोरी करते हो, जब किसी के शब्द चोरी करते हो, that is called plagiarism. So you have this visual here. But yeah, this is where I start my presentation. This is the meat of the matter today. So what is plagiarism? I don't know कि plagiarism का हिंदी term क्या है, but I'm sure अभी तक शायद आप लोग ने सुन लिया होगा कि plagiarism होता क्या है. I'm sure you are already aware, you are already familiar with the word plagiarism, and I'm sure in your classroom also your teachers will constantly tell you, or they will not, they will discourage you from using any kind of unethical practice. So plagiarism is like a household word now. All right. I quote here MLA 9th edition, all right. This is, so there are many citation manuals. Ab sciences mein APA istemal karte hai, and then humanities mein we have MLA, which is Modern Language Association, all right. APA is American Psychological Association. Apart from that, you have Chicago citation manual, all right. So ऐसे कई सारे और citation manual है. अब जहाँ तक कि आजकल तो हर एक journal में अपना अलग सा वो citation regulations होते हैं. But आप कोई भी citations देख लो, कोई भी manual देख लो, कहीं पे भी देख लो, बस एक ही definition होगा, not in the same word, but the same idea, that plagiarism is nothing but presenting, I quote MLA here, that presenting another person's ideas, words, or entire work as your own. जैसे मैंने बोला ना आपको, like for example, आपने ऐसे ही कहीं से जैकेट उठा लिया और आपने पहन के चल दी, all right, and कि you are pretending that as though you're wearing your jacket, particularly if you do not take with the owner's permission. That is, in your academic writing, in research field, हम उसको बोलते हैं plagiarism. Real life में हम बोलते हैं उसको stealing. All right. So that is the definition. Now, there are several forms of plagiarism. Again, इसमें काफी सारे tweaking, काफी सारे nuances होते हैं. लेकिन एक तीन जो forms of plagiarism है, जो कि बहुत common है, वो है एक तो ये ad verbum plagiarism, उसको हम verbatim plagiarism बोलते हैं, हम इसको copy paste वाला plagiarism भी बोलते हैं. I'll explain that further with example. एक तो ये है ad verbum plagiarism, second ये है plagiarism by paraphrasing, ठीक है, एक ये second है, थर्ड है सेल्फ प्लेजरिज्म. तो मैं ये तीनों फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म का मैं एग्जांपल बताऊंगी, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. ऑलराइट, सो यस, सो एज आई सेड, ad verbum plagiarism या verbatim plagiarism या कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म वो प्लेजरिज्म होते हैं जहां आप एक A to Z आपने पूरा कॉपी करके उसको आपने भाई अपना बना डाला. All right. Now that is called ad verbum plagiarism. I just want to share with you. I thought it will be, slightly interesting for you if I share with you some example. ये आपके 2016 में, US election की campaign की एक speech है. Melania Trump, जो कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी थे, ऑलराइट, इनके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाया गया था कि इन्होंने जो मिशेल ओबामा, इनके पहले का जो फर्स्ट लेडी है, इनका स्पीच को उसने प्लेजराइज किया करके. देयर वाज दिस न्यूज. ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस. I'll just read out the speech for you and look at the similarity. And this is what we call plagiarism. So plagiarism कहीं भी हो सकते हैं. जब आप लिख रहे होते हैं, if you do not credit the source, that is called plagiarism. Speech में plagiarism होते हैं. All right. So Melania Trump's speech, this is in 2016.
She says, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond and you do what you say, and keep your promise that you treat people with respect. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब it's full of wisdom, life के एक एक बहुत ही ज़्यादा wise saying है, right? Unfortunately, there is a strong resonance, there is a strong resemblance of this particular speech with the speech that had been made in 2018. 8 साल पहले बोले गए एक speech, मिशेल ओबामा की स्पीच से एक बहुत strong resonance है. Of course, she later on became the first lady, so कोई कुछ नहीं कर पाया, वो केस कभी केस तो of course कोई बना ही नहीं. But this is this was what Michelle Obama said, right? Same word. You see, अब मैंने highlight करके रखी हुई है that you work hard for what you want in life, that your word is your bond, and you do what you say, and treat people with dignity and respect. Now, ये तो copy paste हो गया, all right? Now, Melania Trump may say that देखो Melania Trump ने खुद ने लिखा नहीं होगा speech. They all have a ghost writer, all right? Because they are so busy, they can't be sitting down and writing their own speech. So every great leader has their own ghost writer, a speech writer. So जिन्होंने भी मेलानिया ट्रम्प का स्पीच राइटर लिखे हैं, इन्होंने शायद मिशेल ओबामा के स्पीच कॉपी किए हैं, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एक वर्ड किसी ऑर्डर में बाय चांस आ गए हो. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अ केस ऑफ प्लेजरिज्म. ऑलराइट, नाउ how do we protect ourselves from plagiarism? Now we don't want, मान लो आपने बहुत मेहनत से आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, and but if you were not careful, if you were not wise in using the citations, then your work can be held as unethical. All right, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को कैसे बचाएं? हम अपनी इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाएं? कल को if I am being alleged with plagiarism, ये मेरी इंस्टीट्यूट, मेरी ही अपने बदनामी नहीं, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए बदनामी है. मेरे पूरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, मेरा माय वर्क स्पेस एज वेल एज माय ओन इंस्टीट्यूशन JNU, उसके लिए बदनामी है. All right, so when your work is charged with plagiarism, it is not your integrity that is at stake. Your entire institution comes into question here. All right, तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? By citing. Citing मतलब you quote and then you refer. मतलब आप जिसकी किताब, जब आप गाना गाते हो तो you'll start singing and you know that आप किसका गाना गा रहे हो. आप ये तो नहीं बोलेंगे ना ये मेरा अपना गाना है. All right, you wouldn't say that, right? So similarly, you have to credit the source. Now this is just another example. मैंने common ही example लिए हुए हैं. ये sciences के students, commerce के students, humanities के students के लिए भी ये useful है. So this is English education जब शुरू हुए थे, English education जब introduce हुए थे back in the 19th century, I think it was in 1835. जब Thomas, you see, you can thank as well as you can curse Thomas Macaulay for initiating English education in India. हम मैकॉले को हम डांट भी लगा सकते हैं या आप तारीफ भी कर सकते हैं, अब जिस पर्सपेक्टिव से, राइट? बट ही इज द वन, बिकॉज ऑफ हिज वेरी famous minutes, English education was begun in India, right? तो उन्होंने तब बोला था, मैकॉले had said that कि इंग्लिश के जो एक शेल्फ के जो किताब है, all right, that is far more important and valuable than the entire country's education, something to that effect, right? Now मैंने मान लो for example मैंने मैकॉले का ये देखो जो quotation के अंदर है, these are quotation from Macaulay's minutes. तो मैंने ये quotation जो है मैंने मैकॉले से लिया है. अगर मैंने इसको, if I don't give credit, मैंने पूरा मान लो for example इसको हटा दिया, then I will be charged with plagiarism. So मैंने यहाँ पे मैकॉले का कौन सा, मैकॉले के जो ऐसे है ये एक particular book में था, so which page number, so I gave the page number, so I have given due credit. Now there is a lot of rules and regulation, मतलब हम अपनी मर्जी के हिसाब से किताब अलग जगह पर और किताब का नाम अलग जगह पर और राइटर का नाम अलग जगह पर, ऐसे हमारे मर्जी से नहीं चलते हैं, right? So there is a certain mathematical kind of pattern to it that you need to follow. So MLA 9th edition के हिसाब से जब आप कुछ चीज कोट करते हो, तो अगर आपने मान लो इंट्रोड्यूस किया अपने
पैसेज में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो आपके साइंसेस का हो, राइट, इफ यू फर्स्ट यूज द नेम ऑफ द राइटर हियर, अब पहली बात, जब पहली दफा आप जब नाम इस्तेमाल करोगे, आप उसको पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे, है ना, यू विल राइट द नेम इन फुल फॉर्म। अब मेरा मैकॉले तो मेरा चाचा है करके बस आपने बस मैकॉले लिख दिया, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू यूज एनी, आई होप all the students are listening to me particularly, when you refer to a name, to the name of an author, आप उसको पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो कोटेशन के बाद जो ये ब्रैकेट आते हैं उसमें आप नाम नहीं लिखोगे, you will always only write here the page number, all right, this is MLA style। अगर APA style होते हैं तो उसमें year लिखते हैं, उसके बाद पेज नंबर लिखते हैं, particularly if the name is already written here, all right। now this is an incorrect form of citation, क्योंकि यहाँ पे भी मैकॉले आपने लिख दिया और यहाँ पे भी मैकॉले लिख दिया, ये रिपीटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, this is not unethical because you are still giving citation here, आपने नाम को आपने क्रेडिट दिया है, so this is not unethical but this is an incorrect form of citation। तो करेक्ट फॉर्म साइटेशन क्या होंगे, करेक्ट फॉर्म साइटेशन ये होंगे। Now this is very important because you know all of you are on your way of becoming a doctor, many of you are becoming on the way, many of you are becoming doctor very soon, many of you are pursuing undergraduate studies। देखो सही चीज जानने के लिए, all right, it is never too early to know the right thing, to adopt the correct practices। correct practices अपनाने के लिए कोई उम्र नहीं होते। आप ग्रेजुएशन में अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या चाहे वो आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, करेक्ट प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरू करें तो बहुत ही अच्छा हो, ऑलराइट। सो यू हैव योर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ऑलराइट, ये करेक्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिख दिया है ना, ये MLA फॉर्मेट है। अगर आप APA फॉलो करते हो या शिकागो स्टाइल फॉलो करते हो तो उनका अपना रिक्वायरमेंट है, तो वो डिपेंड करते हैं, आपके जो पब्लिशर है वो डिपेंड करते हैं, वो बोलेंगे आपने पब्लिशर के मर्जी पे होते हैं, ज्यादातर हम लोग जर्नल्स के मर्जी पे होते हैं। अगर आपको बोलते हैं MLA में करो तो आपको MLA में करना पड़ेगा, आपको शिकागो की स्टाइल से अगर रेफरेंस दे दो तो शिकागो के स्टाइल से करना पड़ेगा, राइट। बट देन यू हैव टू बी अवेयर, साइटेशन में एक फुल स्टॉप एक कॉमा इधर उधर नहीं हो सकता है, you have to put every comma, every full stop in place, all right। now missing out a comma या missing out a full stop, गलती से आपने first name या surname नहीं डाला है तो वो unethical नहीं है लेकिन वो incorrect है, all right। now this is a way of putting a quotation। तो quotation जो है आप पूरा full sentence, beginning of the sentence या last सेंटेंस तक आप इस्तेमाल कर सकते हो या सेंटेंस का कुछ हिस्सा आप फॉलो कर सकते हो, ऑलराइट। नाउ हर एक आपके साइटेशन में, साइटेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग में आपके वर्क साइटेड होना चाहिए, ऑलराइट। यू हैव टू, यू नो, आपने सुना होगा बिब्लियोग्राफी, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगी, बट दिस इज माय सोर्स, यू नो, दिस इज अ पैसेज, this is an excerpt that I took from this particular book, all right। So this is slide number 10. Richa, how much time do I have so that I can cut down accordingly? Ma'am, you can take your time. Okay, all right. समझाना ही है। अच्छा, okay, thank you. Don't worry, ma'am. Okay, लास्ट में पता चला ऑर्गेनाइजर और मैं रह गई बस। I hope स्टूडेंट्स आप लोग बस थोड़ा सा अनम्यूट करके बोले कि हाँ मैम हम यहाँ पर है अभी। I hope you are all there or listening to me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are here. Okay. Thank you. All right. Okay, all right. I think you all can mute yourself now. Okay. Please mute all the participants. Okay, you can ask your question in a chat box and then Dr. Correct. Geeta can answer. Geeta ma'am? Yes? May I request you to put your slides on slide mode? They are running in the edit mode. Oh, all right. Okay, wait, let me do that. Yeah. Oh, I'm sorry. Acha, theek hai. Yes. Thank you. Okay, thank you. Now, yes. Now, मैंने अभी तक I have talked about ad verbum plagiarism, right? Copy paste वाला plagiarism कैसे होते हैं
और हम उससे कैसे बच के रहेंगे। अब दूसरा चीज है प्लेजरिज्म बाय पैराफ्रेजिंग। दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म। ये हम जाने अनजाने में हमारे से बहुत होते हैं, राइट। एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? नाउ पहली बात तो प्लेजरिज्म बाय पैराफ्रेजिंग कैसे होते हैं। नाउ जब कोई कोटेशन है, राइट, जब उसको आप अपने शब्द में जब बोलते हो, या कोई पर्टिकुलर लाइन है जब अपने शब्द में बोलते हो, हम उसको बोलते हैं पैराफ्रेज करना। नाउ आई जस्ट गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे कलाम ने बहुत अच्छे एक कोटेशन, बहुत अच्छे एक इन्होंने एफोरिज्म दिए है हमको, which is dreams is not what you see at night, but dreams is something that keeps you awake. Not in this exact word, but this is somewhat what he said. All right. Now we all know कि ये एपीजे कलाम के दिए हुए हमारी एक wisdom है. But I want to sound intellectual among my friends, and I just use this, this in a paraphrase way, and I say that dreams shouldn't make you sleep, but dreams should keep you awake. Now, if I say something like this, हम उसको बोलते हैं paraphrase करना, मतलब एग्जैक्ट वर्ड में नहीं, लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के, थोड़ा उसका ऑर्डर चेंज करके मैंने जो है उसको अपने शब्द में बोल दिया है। नाउ क्या उसका मतलब है कि वो ये शब्द जो है ये मेरी बन गई? नहीं। एंड येट मैंने मान लो एपीजे कलाम को मैंने क्रेडिट नहीं किया है, मैंने उसको अपने अपने स्पीच में मैंने उसको एक व्हाट यू कॉल एकोमोडेट कर लिया, राइट। नाउ दैट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। नाउ दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज प्लेजरिज्म बाय पैराफ्रेजिंग। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आई हैव ट्राइड अगेन टू यूज एन एग्जाम्पल, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप साइंसेस से हो या कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो। दीज आर समथिंग दैट वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ, और कैन बी अवेयर ऑफ, नॉट शुड बी बट वी कैन बी अवेयर ऑफ दिस, ऑलराइट। मैं ये जो एक्सेप्ट जो है ये गांधी जी का हिंद स्वराज से मैंने लिए हैं, ऑलराइट। सो व्हेन गांधी जी टॉक्स अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस, राइट, सो okay, so this is this quotation, ये same exact quotation, same exact excerpt है, end to end मैंने उसको quotation लगाया है। So students, please be ये I'm sure you already know that it is acceptable to use both single quotation as well as double quotation depending upon आपने कौन सी citation manual use किया है। मैंने MLA use किया है तो मैंने double quote use किया है, right? So this is the particular excerpt that I took from this particular book edited by Bruce Lawrence and Aisha Karim. So Aisha Karim और Bruce Lawrence के एक किताब में एक हिस्सा बन के गांधी, so इसमें आप गांधी जी नहीं बोल सकते, या आप इसमें महात्मा नहीं बोल सकते। महात्मा और गांधी जी हम प्यार से बोलते हैं, लेकिन आउटसाइड द बुक, जब आप बुक के बारे में बात करते हो तो आप गांधी को वही दर्जा देंगे जो आप बाकी ऑथर्स को देंगे। So you will write the name of this, the name, Gandhi Mohandas K. All right. So MLA में जो middle name होते हैं वो abbreviate करते हैं. So that's why it's just K here. You can, when if it is allowed, then you can use Gandhi Mohandas Karamchand. All right. So passive resistance is a method of securing rights by personal suffering. It is the reverse of resistance by arms. When I refuse to do a thing that is repugnant to my conscience, I use soul force. तो उन्होंने ये एक excerpt दिए थे. All right. तो उसको जो है मैं कैसा पैराफ्रेज कर सकती हूँ, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ कोटिंग दिस। आप उसको जो है सीधा सीधा पूरा कोटेशन को उठा के विदिन इन्वर्टेड कॉमास करके डाल सकती हूँ, एंड आपने मान लो नाम नहीं दिया है तो वो आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस होंगे। एंड नाउ दिस इज फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है प्लेजराइज्ड, जो कि इनकरेक्ट एक वे ऑफ साइटेशन है। यहाँ पे मैंने साइट किया ही नहीं। This is an incorrect use of using somebody else's intellectual property. All right. This is an incorrect use of somebody else's idea, somebody else's word. All right. So passive resistance, for example, passive resistance is a way to secure rights by personal suffering. It is opposite to the use of arms. When Mahatma Gandhi found something repugnant to his conscience, he uses soul force. तो मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी बोला तो है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे महात्मा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे I should be using Mohandas K. Gandhi, all right? But this is the wrong way of using. I have deliberately done this to show you what not to do. Number one. Number two, अब इसमें देखो गांधी का, महात्मा गांधी का शब्द कौन सा है और मेरा शब्द कौन सा है. मेरा, देखो when you paraphrase something, paraphrase and quotation बहुत different होते हैं. Quotation क्या होता है? Quotation तो सीधा कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, उसमें क्रेडिट डाल दो अपना, एंड उससे आगे बढ़ के आप उसको एनालाइज करो या whatever it is. Paraphrase जब करते हो तो उसमें आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन होते हैं, आपके अपने एक उसमें पॉइंट होते हैं, आपने उस पर्टिकुलर शब्द को, you know, how have you taken that particular passage, all right? So here there is a blurring between what my opinion is and what Gandhi had said, all right? So here this is the wrong way of doing paraphrase. This is an incorrect way of doing paraphrase. Number one, paraphrase is not conversion of direct speech to reported speech or switching words to synonym. So direct speech matlab, like for example, yahan pe dekho, Gandhi had said, when I refuse to do a thing that is repugnant to my conscience, I use soul force, all right? So I, you know, so this is called direct speech. So usko aapne indirect speech, yeah, reported speech mein aapne badal diya. Like for example, I have used that when Gandhi found something repugnant to his conscience, he uses soul force. So direct speech ko reported speech mein, indirect speech mein badalna paraphrasing nahi hota hai, all right? So by, and then number one. Number two, synonym supply करके एक शब्द को दूसरा शब्द से replace करना paraphrasing नहीं होता है. All right. So there are many things that is wrong with this paraphrase, with the example that I'm giving you. All right. And I have deliberately kept it wrong to explain it to you. Right. So number one, that just by switching the speeches, like indirect se lekar, direct se lekar indirect, all right, yeah, just by switching words, that doesn't qualify as a paraphrase. Number one. Number two, it doesn't give proper credit to the writer here. यहाँ पे हमने प्यार से महात्मा गांधी लिख दिया. मैंने इतना I idolize Gandhi that I want to write Mahatma Gandhi. I don't want to write Mohandas K. Gandhi. अब ऐसे नहीं चलता है research में, right? So you have to present the writer as is, the name of the writer as is. You cannot say, अच्छा M.K. Gandhi तो मोहनदास करमचंद गांधी होता है करके आपने मान लो किताब में M.K. गांधी करके लिखा है, राइटर ने चूज करके, एडिटर ने चूज करके M.K. गांधी लिखा है, तो आपने अपनी मर्जी से मोहनदास के गांधी करके, you cannot replace it, all right? Now these are not ethical. So replacing the names is not about unethical or ethical, it's incorrect, all right? Now the last point is, as I said, no clarity on which part of the passage belong to M.K. Gandhi, all right? So these are the things that are wrong with the first paraphrase. Second is, second paraphrase. Now second paraphrase में देखिए वही same excerpt को मैंने थोड़ा सा इधर उधर tweak करके मैंने paraphrase बनाया है, but this is not the right paraphrase. Again ये wrong, ये incorrect paraphrase है. Again this is to explain you. Passive resistance is a reverse of armed resistance. It is a method of securing rights by personal suffering. M.K. Gandhi uses his soul force to refuse something which is repugnant to his conscience. इस वाले paraphrase में मैंने क्या किया? मैंने बस words का structure change किया. अगर आप देखिए यहाँ पे passive resistance is a method of securing rights. यहाँ पे देखो मैंने method of securing rights को मैंने second sentence में डाल दिया और second sentence को मैंने first sentence में डाल दिया. तो मैंने क्या किया इसमें? मैंने बस sentence का structure बदला, sentence का मैंने order बदला. Now does this make this particular excerpt a paraphrase, a correct paraphrase? No, it is not. All right. So what is wrong with this? What is wrong is, you know, I've just merely changed the sentence structure, which is incorrect. Number one. Number two, paraphrasing में the core idea, जो core idea होता है, आप जो quotation जो refer कर रहे हो, जो excerpt refer कर रहे हो, the core idea should be should be transported, should be rewritten, rather should be, given in your own, expressed in your own language in paraphrase. Now, what can be considered the correct paraphrase? अब देखो second वाले में मैंने credit भी नहीं किया है. All right. Now, okay, sorry. All right. So here in this first part, देखो ये जो है ये एक example है of correct paraphrase.
मैंने दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। एक ये है जैसे जिस तरीके से राइटर ने, जो एडिटर है, बुक का जो एडिटर है, इन्होंने एम के गांधी का नाम दिया है, वैसे ही हम लिखेंगे मोहनदास के गांधी इन हिंद स्वराज। किताब का नाम आइटलिसाइज करेंगे, अगर आर्टिकल का नाम है तो उसको विदिन कोट्स डालेंगे। सो मोहनदास के गांधी इन हिंद स्वराज exhorts. Now आपको देखो, राइटिंग इज ऑल अबाउट आप चाहे आप साइंसेस में क्यों ना करें अपना रिसर्च, या कॉमर्स में करें, कॉमर्स फील्ड में करें, या कोई भी डिसिप्लिन के लिए आप रिसर्च करते हो, लिखना तो आपने भाषा इस्तेमाल करके, राइट। सो आपको जानना जरूरी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि एक पर्टिकुलर जो एक्सर्प्ट है, क्या वो एडवाइस है, क्या वो आर्ग्यूमेंट है, क्या वो एक ओपिनियन है, ऑलराइट। बिकॉज इफ यू जस्ट से सेज, इफ आई वे टू जस्ट से यहाँ पर, सॉरी आई कैन नॉट चेंज इन दिस स्लाइड, बट इफ आई एग्जॉर्ट की जगह, एग्जॉर्ट मतलब एडवाइस करना, राइट, एग्जॉर्ट मतलब एडवाइस करना, तो मैंने एग्जॉर्ट की जगह मैंने यहाँ पे से लिख दिया, SAY से मतलब बोलना। देखो बोलना किस ढंग में बोल रहे हो आप, ऑलराइट, क्या वो आर्ग्यू कर रहे हो, सो बोलना SAY जो है, इट्स अ वेरी वेग टर्म, इसका स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। या क्या वो उसको क्लेम कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द वर्ब दैट यू नीड टू यूज। दैट्स व्हाई आई हैव काइंड ऑफ इट्स अ वेरी small tip that I am just kind of sharing, particularly for the undergraduate students, because I do this all the time with my students, and I want to give what I have with me, and I want to give my best. So that's why I'm kind of deviating and giving you very small tips of writing as well, because research में एक mechanics of writing करके भी एक अहम हिस्सा होते हैं, जो I cannot cover in entirety here. So यहाँ पे देखो, हिंद स्वराज, मोहनदास के गांधी in हिंद स्वराज exhorts, alright, so exhorts मतलब advice देना, सलाह देना, right, that sole force. Now देखो मैंने यहाँ पर okay, यहाँ पर I have given here single quotation में, right, it should have been double quotation, the sole force, right, sole force शब्द जो है, right, sole force शब्द जो है, ये मेरी शब्द नहीं है। तो कुछ शब्द जो है, कुछ अहम शब्द जो है, जो important words, important phrases can be used in the paraphrase, it can be used as it is, but within quotes. Sole force, the force gathered by passive resistance. So Gandhi had used passive resistance and sole force, all right. So ahimsa, so he used, so when you talk about ahimsa, it was used by Gandhi, all right. So so I have kept them in quotes, and this is my paraphrase, that and this is what I have understood. मैंने इस तरीके से समझा है गांधी के जो excerpt जो है, right, that sole force, which is the force gathered by passive resistance and not violence, is the only weapon to reclaim one's rights. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने गांधी ने जो क्या बोला है उसका gist जो है, all right, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है अपने भाषा में, and I have given the page number here. This is your ethical way of using a data. This is your ethical way of citing your data. You will give the page number, you will give the writer's name in entirety, all right, particularly if it occurs in the first time. Or you can say, मान लो आपने for example मोहनदास के गांधी आपकी रिसर्च में पहली शुरू में अकर कर चुके हैं, मतलब आ चुके हैं, then you can just write Gandhi and page number 122, all right. And this is a paraphrase that I've written, that sole force and not violence is the only weapon esteemed to be potent enough to reclaim one's right, all right. So this is the second paraphrase, which is the acceptable paraphrase. मैंने बहुत diligently मैंने writer का नाम भी लिखा है और पेज नंबर का नाम भी लिखा है, और साथ ही साथ मैंने जो है, मैंने कहाँ से लिया ये किताब, वो पब्लिशर कौन है, वो एडिटर कौन है, वो कहाँ पे पब्लिश हुए हैं, और किस कौन से and then कौन से year में पब्लिश हुए हैं. I've given all the details here. So your citation should always have a corresponding list, that looks like this. Okay, so this is the so far I have covered plagiarism by paraphrase. This is self-plagiarism, all right, this is self-plagiarism, and कहाँ तक ये हमारे आसपास के academic spaces में दिखते हैं, अगर हम उसको seriously अगर हम उसको देखने लगेंगे तो कई सारे students का assignments and all disqualify हो जाएंगे,
So what is self-plagiarism? I take this definition from यहाँ पे मेरा source दिया हुआ है नीचे, ये website के ये जो APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसके वेबसाइट से मैंने ये वाला आर्टिकल्स को रेफर करते हुए दिया है. सो आई हैव गिवन इन अ सर्टेन फॉर्मेट, ये मैंने अपनी मर्जी से ऐसे करके नहीं डाला है. आई हैव फॉलोड MLA फॉर्मेट टू प्रेजेंट टू लिस्ट डाउन द डिटेल्स ऑफ द सोर्स हियर. नाउ व्हाट इज सेल्फ प्लेजरिज्म? ऑलराइट, सेल्फ प्लेजरिज्म इज presentation of your own previously published work as ओरिजिनल. ऑलराइट, मान लो फॉर एग्जांपल आप एक राइटर है, आपने 10 साल पहले आपने एक किताब लिखी है and you know people forgot about your book and it's been a long time. अच्छा सभी भूल गए होंगे कौन पढ़ रहे, you know कोई किसने ज्यादा, वैसे भी ज्यादा कॉपीज नहीं था मेरे पास करके, और like for example it was published in इसको you know in another state करके by another publisher करके, you thought you can publish the same work again, you know, and again under a different title or maybe under the same title by a different publisher. That is called self plagiarism. जब आप अपने खुद के ही आइडिया, खुद के ही आर्टिकल को आप उसको रीपैकेज करके आप उसको जब देते हो, हम उसको बोलते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म. सो फॉर एग्जांपल, so self-plagiarism entails presentation of your own previously published work as original, and next is that copyright violations, it entails copyright violations if you publish the same work with multiple publishers. आपने OUP के साथ भी publish कर दिया, आपने जुबान के साथ भी publish किया, आपने स्प्रिंगर के साथ भी publish किया same book को. That is called duplicate publication. That is copyright violations, and it is called self-plagiarism. ये तो हो गई बात आपके published authors के and you know published scholars के. Students के बाद जब आते हैं, you know कई दफा क्या होता है, students मान लो for example you know you study the same subject, all right, let's say you've submitted a particular paper to another teacher, an assignment to another teacher, and similar मान लो टॉपिक पर एक और असाइनमेंट मिल रहा है, तो आपने जो क्या किया, आपने बिना अपना टीचर को बताए उसी सेम असाइनमेंट को आपने दूसरा टीचर को भी आपने दे दिया, मतलब एक तीर से आपने दो शिकार कर डाला. Alright, now that is called self-plagiarism. You cannot, now you have to be very, very diligent about this. You have to be very, very careful about this, because you see things that you may not very strictly follow as a college student. देखो habit, आदत, you know इंसान जो है वो आदत के you know एक गुलाम होते हैं, right? आपने अपने आदत अगर ऐसे ही बना लिया कि इधर उधर से ताप-तीप के कॉपी पेस्ट करके आपने इसका आदत बना लिया, तो वो आदत आपके बने रहेंगे. You have to break that habit, you know, and it is now, you know, I really hope that once you exit this particular you know session, you will all make this resolve that, you know, however what you call let's say flawed your assignment may be, or it may not be the best, but you will be truthful with your assignment. आप अपने assignment जो है, एक ही असाइनमेंट को आप दो अलग अलग पेपर्स के लिए, दो अलग अलग टीचर के लिए आप नहीं दे सकते. दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म. सो दिस entire session is not just you know, not for just delivering a paper today, all right? It is meant to inculcate and it is meant to instill a habit in all of us. You see that we have to be very honest with our own work. We have to be truthful to our work. आप ये सोच लो कि आपकी खुद से बाहर कोई भी अगर आपको मान लो शब्द अच्छा लगता है, फ्रेज अच्छे लगते हैं, मान लो कुछ पिक्चर आपको अच्छे लगते हैं, आप उसको फ्रीली आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. You have to treat them as somebody else's intellectual property, all right? So and you have to give credit, you know, to the source, all right? So ये हो गए. So far I have covered, you know, research ethics. Ethics in research. I have covered plagiarism and the different forms of plagiarism. अब आगे चलते हैं. बिब्लियोग्राफी कई दफा क्या होता है, देखो व्हाट्स इन द नेम करके शेक्सपियर के प्ले में थे, व्हाट्स इन द नेम, नाम में रखा क्या है, भाई नाम में सब कुछ रखा हुआ है, ऑलराइट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम नेहा है तो हम आपको सीमा नहीं बुला सकते, right? So you know, you will have your list of books. आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको अपनी बिब्लियोग्राफी नाम दे डाला, या वर्क साइटेड नाम दे डाला, या रेफरेंसेस नाम दे डाला, ऐसे नहीं होता है. There is a certain
what you call meaning attached to all these works. All right. Now here again, I particularly refer to MLA, APA. जब आप reference, जब भी कभी भी आपको लगता है कि आपको, if you want to look up on citation styles and referencing, these are Chicago, APA, MLA. They are very, very trustworthy, very reliable, and of course commonly used citation style, and you must refer to their books and to their websites for any reference. सही किसी के ब्लॉग में मत जाना, किसी के पर्सनल आर्टिकल में मत जाना. आपको कभी भी रेफरेंसिंग स्टाइल पे अगर आपको कुछ consult करना है, then you will consult any of this depending upon your discipline. Now, bibliography, works consulted, works cited. Now, सारे के सारे क्या है? They are all Geeta, can I just make one more suggestion here? Yes. Because yesterday in session 1, Richa has taken एक वर्कशॉप में उसने एक इनको प्रैक्टिकल दिखाया था करके, मेंडले करके, जो मेंडले सॉफ्टवेयर है उसमें साइंस के जितने भी जर्नल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे साइंस के भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, तो साइंस में जर्नल यू पुट द नेम ऑफ द जर्नल, तो मेंडले जो है वो जितने भी ऐसे जर्नल है उनके अकॉर्डिंगली अपने आप वो रेफरेंस को अरेंज कर देता है कि व्हाट द स्टाइल इज नीडेड फॉर द particular journal. So because you are talking about MLA and all, this is for humanities, but for science journal they might have to use Mendeley or science index, what the journal they needed. So I just want to add to this your that's a wonderful lecture. I just want to say even science have the norms what to add and how to correct okay? Yes, of course, that's what I'm saying. Thank you Rashmi. Yeah, so Mendeley is a platform, it's a platform where, it kind of, once you feed in your, no, personally, I don't use Mendeley. If you ask me, I'm more of a grassroots worker, so to say. मुझे एक शब्द मैं अपने आप से, मैं list करती हूँ so that, I have feel, so what happens is in Mendeley, on Mendeley when you use, I think maybe I also attended a lot of these research methodology workshops. So you have to feed in your article, and जिसमें आप अपने जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल है, चाहे आपके साइंसेस में है तो साइंस के हिसाब से जो आपकी साइटेशन मैनुअल जो इस्तेमाल करते हैं, रेकमेंडेड जो मैनुअल है उसके हिसाब से आप उसको लिस्ट आपके एज फार एज आई अंडरस्टैंड वो जनरेट हो सकते हैं साइंसेस के. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट टुडे हियर अगेन आई एम नॉट देयरफॉर आई एम नॉट पर्टिकुलरली, मैंने एमएलए तो यूज किया है लेकिन मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आपको किस ऑर्डर में डालना है, बिकॉज यू सी दे आर ऑल वेरी इजी रीड. आप साइंसेस का है अगर तो साइंसेस के जो आपके रेकमेंडेड जो मैनुअल है, जो कि आई अंडरस्टैंड आई थिंक एपीए इज यूज्ड फॉर साइंसेस, तो इसके हिसाब से दिए हुए होते हैं. लाइक फर्स्ट इट शुड बी लास्ट नेम एंड देन कॉमा एंड देन फर्स्ट नेम एंड देन उसके बाद ईयर लिखते हैं. एमएलए में ईयर सबसे लास्ट में लिखते हैं, एपीए में ईयर पहले लिखते हैं. ऑलराइट, सो ऑल दीज नुएंसेस आर देयर जो कि आप अपने से भी यू कैन रेफर. सो देयर आर लॉट ऑफ कोर्स tools like Mendeley and other tools which can also generate your bibliography. But as of now, but what I want, लेकिन जो भी आपके जो भी Mendeley से हो या कोई other bibliography या you have me or something like that as well, किताब में तो पेस्ट आपने ही करना है, नाम तो आपने ही देना है. Now the question is, आप उसको बिब्लियोग्राफी नेम देंगे या वर्क्स कंसल्टेड देंगे या वर्क साइटेड देंगे, नंबर 1. नंबर 2, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, देखो जब स्टूडेंट थे, जब मैं आपकी उम्र की थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, उस समय पे मेरे हिसाब से भाई टेक्स्ट मतलब जो आपके हाथ में जो पकड़ सकती है, जो हार्ड बाउंड किताब होते हैं जो पकड़ के हम पढ़ते हैं, हम उसको टेक्स्ट बोलते थे उस जमाने में. नाउ टुडे टेक्स्ट जो शब्द है वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड हो गए हैं. नाउ इट इज वेरी फ्लूइड एंड टेक्स्ट कैन बी एनीथिंग. टेक्स्ट कैन बी योर टिकटॉक वीडियो कैन बी अ टेक्स्ट, एक ब्लॉग भी आपके टेक्स्ट हो सकते हैं. एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो टेक्स्ट हो सकते हैं. नाउ दिस इज अगेन पर्टिकुलरली इन humanities. All right, now sciences में जो है text can be your research that you have conducted, all right, or review books that are there, or several other books that are there, right? But as far as today text, it is acceptable now that as far as text is concerned, text क्या होते हैं, वो chapter हो सकते हैं किताब में,
वो एक जर्नल में आर्टिकल हो सकते हैं, वो एक वीडियो का क्लिप हो सकते हैं, वो एक फिल्म हो सकते हैं, इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी अ व्लॉग, इट कैन बी अ ब्लॉग, इट कैन ऑल्सो बी अ ट्वीट, alright, or it can be even Facebook post. जैसे like for example आपकी जो कॉमर्स फील्ड से जो फॉर एग्जांपल मार्केट जो रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर हैबिट्स को इस्तेमाल कर रिसर्च करते हैं, ये सारे लोग जो है क्या करते हैं, ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट होते हैं, ट्वीट्स एंड यो जो FB के पोस्ट होते हैं, इन सब को एनालाइज करते हैं, ऑलराइट. एंड देयर आर सर्टेन devices, NVivo is a tool which can tap all these social media posts. क्योंकि अगर सोशल मीडिया पोस्ट अगर एक एक आप देखकर रिसर्च करने लग जाओगे तो फिर 5 साल में भी खत्म नहीं होने वाला रिसर्च आपके, ऑलराइट. सो देयर आर several tools to kind of tap these social media posts. All right, so text पहली बात तो text अब change हो गया, text का meaning change हो गया है, ठीक है. Next point is that like for example when we say MLA particularly recommend करते हैं कि जब हम like bibliography क्या होता है, like bibliography as we understand earlier पहले क्या होता था, पहले bibliography यूज करते थे. जब मैं रिसर्च कर रही थी शुरू में, तब हम bibliography यूज करते थे. Now अब कैसा होता है like I was also a student like you, and I was of course a very average student. I did not have I don't lay claim to any kind of intellectual excellence. All right, जब हम लाइब्रेरी में जाते पहले बार हम bibliography देखते थे, इतना मोटा bibliography, इतने सारे किताबें पढ़ ले उसने, I used to think like that. All right, so bibliography is actually, I got to understand later on that bibliography is actually a list of all the text. आपने चाहे वो उसको आपने अपनी किताब में उसको आपने साइट किया है कि नहीं, आपने अपने रिसर्च के दौरान पर मान लो एक किताब भी, एक न्यूज़पेपर भी आपने पढ़ डाला, आपके दिमाग में रहा, उस दौरान जो भी है आपने उसको कोट नहीं किया है, आपने उसको यूज किया ही नहीं है, फिर भी आपने उसको कंसल्ट तो किया है for ideas or for similarities or whatever it is. Then we used to use the word bibliography. तब हम bibliography यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं bibliography. Certain manuals recommend the use of the word bibliography. Like for example, Chicago style manual जो है वो bibliography शब्द को allow करते हैं for a list that includes both works cited and works consulted. All right. Now, works cited क्या होता है? Works cited मतलब आपने मान लो for example 20 किताब पढ़े हैं या 20 आर्टिकल पढ़े हैं या 100 आर्टिकल पढ़े हैं. उस 100 आर्टिकल में से आपने बस 70 आर्टिकल्स को आपने अपने टेक्स्ट में, अपने आर्टिकल में you referred to those article, you cited those articles. All right, in that case particularly MLA ये recommend करते हैं कि आप बस work cited, all right, work cited लिखेंगे. All right, so in that particular condition. All right, but however अगर आपने मान लो 100 के 100 किताब पढ़ी है, आपने 100 की 100 किताब को डाल दिया है, then it will be works consulted. नहीं तो if you 100 में से अगर if you use only 70 articles that you referred to, that you cited, then it will be works cited. क्योंकि cite का meaning ही अलग होता है, consult का meaning अलग होता है. Consult मतलब आपने refer किया, alright, तो रेफर किया, एंड साइट मतलब आपने उसको उसका ही शब्द को आपने कोट करके पेज नंबर डाल के लिखे हैं. सो दैट विल बी वर्क साइटेड. नाउ वर्क साइटेड एंड देन रेफरेंसेस, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग. हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. रेफरेंसेस यूज करना है कि वर्क साइटेड. प्लीज पार्टिसिपेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ऑलराइट, सो नाउ अगेन, these are all list of texts, as I said, arranged in alphabetical manner and preferably with the last name of the author. अगर author का नाम है, अगर author का नाम नहीं है तो किताब के नाम से ही आप शुरू कर सकते हैं. Right, now again as I said, Chicago Manual of Style recommends the title, references or work cited. So Chicago Manual जो है bibliography for works consulted, और जो work cite आपने जो cite किया है उसके लिए references और work cited. So इसलिए आप ये इन सब भी कॉन्टेक्स्ट को नजर रखते हुए अगर आपने ये सोच लीजिए पहले, पर्टिकुलरली अगर आपने MLA फॉर्मेट यूज किया है, देन you will use
what you call and if you are listing down only those articles that you referred to or that you cited in your text, then you will say work cited, right? अगर आपने what you call Chicago use किया है, larger अगर आपको term use करना है तो वो bibliography use कर सकते हैं या references use या works consulted use कर सकते हैं, ठीक है? So this is about कि आप क्या नाम देंगे, आप कौन सा नाम दें इस लिस्ट को, कई सारे नाम हैं, इनमें से आपने कौन से नाम चूज करना है. Alright, that covers अभी तक citation, the list of text. Now comes the regulation. Do we have a regulation? बल्कि UGC तो ये बोलते हैं कि हर institution, हर higher education institution में एक particular body होना चाहिए जो plagiarism issues को tackle करते हैं. Alright, चाहे आपकी वो कॉलेज हो, चाहे आपकी वो यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी तो ये बोलते हैं. Alright, so यूजीसी का 2018 में because of the number of you all know, right, आपने कई सारे फेसबुक में भी पोस्ट पढ़े होंगे, कई सारे वायरल पोस्ट भी फॉरवर्ड देखे होंगे, thesis available for sale. You all know, we all know the ugliness which is there, which is also kind of fermenting in our academic space. तो इतने सारे प्लेजरिज्म की केसेस हो गए थे कि यूजीसी को इंटरवीन करना पड़ा. दैट 2018 दिस इज 2018, आई एम सॉरी यहाँ पे 19 रह गया है. सो 2018 में यूजीसी केम आउट विद दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, राइट, दैट यूजीसी प्रमोशन ऑफ academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions. All right, तो ये particular regulation के हिसाब से कई सारे level of at least UGC is very kind to us. अगर मान लो आप बाहर जाते हैं इंडिया के तो शायद I don't know whether they will even recognize these levels. At least I think UGC has been very kind enough that you have certain levels of plagiarism. All right. Okay, so UGC के ये जो Gazette of India में ये UGC की जो regulation है ये publish हुए हैं 2018 में, and इसके clause number 8 में levels of page number 10 part number 3 section 4 में levels of plagiarism दिए गए हैं. मतलब आपके कई सारे लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म हैं जो आपको अलाउ कंसेशन देते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्लेजराइज करना है. ऑलराइट, यूजीसी हैज गिवन दिस लेवल्स बिकॉज़ गिविंग द सर्टेन कंसेशन की शायद गलती से भी हो सकते हैं, गलती हो जाता है लोग बिकॉज ऑफ मे बी पुअर प्रूफ रीडिंग, गलती हो जाते हैं, नाम मिसप्रिंट हो जाते हैं या नाम डिलीट हो जाते हैं, दीज काइंड ऑफ माइनर एरर्स happen. तो उन सबको नजरअंदाज रखते हुए they have come up with this level. So there are 4 levels of plagiarism. Similarities क्या करते हैं कि जैसे like for example how I do, like for example मेरे अपने क्लास में मैं they are all your peers, all right, and मेरे अपने क्लास में मैं कैसे plagiarism यूज करती हूँ. like if I don't have a tool to use, assignment को मैं सीधा गूगल में डाल देती हूँ. मैं like assignment में जो कोई एक particular sentence है जो मुझे लगता है कि ये student जैसे नहीं लग रहा है तो मैं इसको गूगल में डाल देती हूँ. then I see कि ये तो पूरा ही इंटरनेट से निकाले गए हैं. So and there are various tools, of course. These tools are there at the institutional level. या अगर आप पे कर सकते हो, like of course in the sense like students, of course I don't expect you to buy the tools or download the tools, but there are certain tools that that are used. So there are different levels of plagiarism. तो जो similarity क्या करते हैं, ये सब tools ये जो है similarity check करते हैं. एक particular group of words का similar, जैसे मैंने मेलानिया ट्रम्प एंड मिशेल ओबामा की जो स्पीच के जो सिमिलैरिटी है जैसे दिखाया ना वैसे ही चेक करते हैं these tools to check plagiarism. So if the similarity is up to 10%, तो वो minor similarity या minor plagiarism minor level माने जाते हैं 10% तक. तो so there is no penalty for that. all right. अगर सिमिलैरिटी जो है 10 से लेकर 40% तक है, that is called level 1, and level 2 is 40 to 60, and level 3 is 60 above. So of course level 3 is the most heinous unethical practice here, and there are penalties. ऐसा नहीं है कि आप plagiarize करेंगे और पकड़े जाएंगे तो ऐसे ही आप you'll be scot free. all right, there are certain penalty to it. So let me read the penalties for you at this level. Now, for example,
this is for submission of thesis and dissertation. So जो PhD students है, of course they are already aware that before you submit, you have to, you know, let your thesis pass under the X-ray machine of, you know, checking plagiarism. All right. So similarities up to 10%, जो कि minor plagiarism बोले जाते हैं, इसका कोई penalty नहीं है. All right. अगर 10 to 40% का अगर लेवल का अगर आपको सिमिलैरिटी आपके थीसिस में रिफ्लेक्ट होते हैं, then the student will be asked to submit a revised script within a stipulated period of time, not exceeding 6 months. ये UGC का रूल है. This is UGC rule and assiduously followed. All right. 40 to 60% का मान लो अगर plagiarism flag होता है, then the student shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. All right. Imagine अगर 40 से 60 तक का आपका plagiarism level फाइल निकल के आते हैं, तो एक साल, you know, you cannot be even submitting your revised script. एक साल आपका imagine PhD रोक के रखना पड़ेगा, और आपने कितने सारे आपके future prospects आपने सोचे होंगे, but because of, let's say, you know, this unethical practice, right? You know, you'll not be allowed to submit the script. Level 3 में you have similarity above 60. Now such student, इनका तो registration ही cancel हो जाए. No, if you are detected with, if your work is detected with level 3 plagiarism, then your work, then your registration, forget about your work, your registration itself will be cancelled. All right. Now, sorry, this is the last slide. Right, with this I'll come to an end, and this is for you know, people who have published, all right, plagiarism in academic and research publications. जिन्होंने already articles and books publish कर चुके हैं. Again, 10%, no penalty. All right. 10 to 40% अगर है, तो you'll be asked to withdraw the manuscript. All right. अगर 40 to 60% का, मान लो आपने किताब छप दिया, all right, या आर्टिकल छप दिया, and आपसे ये आपके ये, you know, your work has been detected or charged with plagiarism of between 40 to 60, then you'll be asked to withdraw the manuscript. You'll be denied a right to 1 annual increment. You will not be allowed to be a supervisor to any new research student for a period of 2 years. ठीक है? अगर this is for professionals, all right, this is for people who are already teaching or are already you know, employed in any institution. And if the similarity is above 60%, then of course you are denied 2 annual increments. Your manuscript has to be withdrawn. Again, you'll not be allowed to supervise any research student for the next 3 years. All right. So these are the technicalities that we need to observe. And I hope now with this, my presentation comes to an end, and I hope I have been able to deliver my point. And I am sorry, I think I have eaten into sufficiently and largely eaten into Dr. Prabhu's time. And because I generously took up the offer of Richa, that I can continue on and on. So thank you so much for a patient listening. I hope you've learned something, if not enjoyed, but learned something from my presentation. Thank you so much. If you have any question, I can take now, or we can wait for Prabhu. Thank you so much, Geeta ma'am. Thank you for this wonderful and very knowledgeable lecture. I think everybody out here, whether teachers, whether students, they must have learned a lot about academic honesty and its importance in our field. So there are a few questions, ma'am, in the chat window. If you permit, may I take it? Yes, yes. So ma'am, Sabita, she's asking, ma'am, is self-plagiarism punishable? Yes, again, you know, these are rules and regulations that are written in letters, all right. It is certainly, you know, if you're, you know, it is punishable in the sense that, you know, your integrity comes into question. No, punishable the terms hote hain. Legal, you know, perspective say whether you can be taken to the court or not. All right. Yes, if it is a copyright infringement, मान लो एक किताब आपने already छप दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, उसी सेम किताब को आपने जाके पेंगुइन के साथ आपने छप दिया है,
then of course there is a copyright infringement. All right, you have violated the law. Now somebody can file that. It can be, if it is a copyright infringement, then yes, you can be charged with these legal penalties. All right, so if it is a book, but again, agar aap student ho, agar aap apni kitab ke bare mein baat, apne article या assignment जो आपने दूसरा teacher को दिया है and आपने दूसरा और भी दिया है, then of course you are punishable in the extent that your teacher might just give you 0. All right, number one. But forget about all this, but whether you are punishable or not. What comes into question is, or what becomes questionable is your integrity. कि आप किस तरीके का रिसर्च स्कॉलर है, किस तरीके का स्टूडेंट है, वो इमीडिएटली फ्लैग हो जाते हैं, टीचर को एकदम से नोटिस हो जाते हैं. Now that is something which you should be, you should stay away from. Okay, I hope your query has been appropriately addressed, and there are a lot of compliments, ma'am, flowing in, and I must say that, because the person is saying the lecture is very informative and good, and I think no one will be questioning, because this was a fantastic lecture. Thank you, thank you. Still, there is one more question. As transparency is a part of research ethics, should confidential researches be somewhat transparent too? Yeah, that's a very interesting question, because you have to find that middle ground. Transparency. Ma'am, you are muted. Geeta ma'am, can you unmute yourself? Yes. Yeah, yes, sorry. So I was saying, yes, that it's a very good question. It's a very problematic question, not because you have asked a problematic question, in the sense that transparency should also and always keep in mind confidentiality. All right, because you see, for example, you've taken data from a group of people. Let's say, for example, people who identify themselves as queer, people who identify themselves of different sexual orientation. All right, now if that person doesn't want you, I'm sorry, Geeta, to just intervene a little bit. I think the students, you will have a time tomorrow to ask questions from all the session, because abhi the next speaker, he is waiting to deliver his lecture. And thank you, Geeta. It was really wonderful. And thank you so much. Yeah, so I'm sorry, but I request all the participants to please put up your question in chat box, so Dr. Shilpa can write it down and we can answer your all queries tomorrow in the valedictory session. Okay, sure, thank sure, you, thank you, we'll thank you. Yeah. Okay, so now without wasting much of the time, I would like to introduce our second resource person of the day, Dr. Prabhu Kumar Mishra. He is currently working as assistant professor in the Department of Geography of Shivaji College. सर ने अपना अंडर ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से करा है, और सर की पीजी, एमफिल और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है. सर टीचिंग प्रोफेशन में 2011 से हैं और अभी तक शिवाजी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं. सर का रिसर्च एरिया, और सर रिसर्च में भी बहुत एक्टिव हैं, और सर 2006 से 2008 में रिसर्च एसोसिएट, देन उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट एंड देन प्रोजेक्ट फेलो भी रहे हैं. एंड उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी अपने इस टेन्योर में फुलफिल करे हैं. उन्होंने एक मेजर प्रोजेक्ट भी करा था जो ICSSR द्वारा फंडेड था, और उनके बहुत ही इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स एंड बुक्स में आर्टिकल्स हैं विच आर ऑफ हाई रिप्यूट. Sir has also guided one PhD and one MPhil student under his supervision, and he is also recipient of many prestigious positions and awards, like he is vice president in the northern region of National Association of Geographers India from 2018 to 19, and he also held a position of executive member of the northern region National Association of Geographers India from 2016 to 17, and then from 19 to 20. And one interesting fact about sir is कि सर कंटेंट डेवलपमेंट में भी बहुत आगे रहे हैं. उन्होंने सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भी कंटेंट डेवलप करा है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए भी सर टाइम टू टाइम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं. So now, sir, I hand over the virtual stage to Dr. Prabhu so that he can enlighten with you his immense knowledge and experience. So over to you, sir. Thank you, Dr. Shilpa. Respected Rashmi ma'am,
coordinator from DAV College, Garima Jain ma'am, and all the esteemed viewers and participants. I also mentioned Richa Chaudhary. She is coordinating in a very nice way, and my fellow speaker who gave a very excellent lecture on plagiarism. So I don't know how much time I'm having for my speech, but I will try to be very concise as the spirit of the topic has been already covered by uh, Dr. Geeta. So I will start my presentation. Let me share my slide with you. Hope it's visible. Yeah, it's visible. Okay. So I'm going to discuss basically on research ethics and IPR, and I thought I will talk in detail about this research ethics, but most of the things is most of the points have been already covered by Dr. Geeta. So I will discuss few examples and few concerns which need to be addressed and which need to be understood by the students, and then I will also briefly discuss about the intellectual property resource issues, that what are IPR issues and what are the various types and how it can be comprehended, right? So this is my outline of the presentation. First, I will be dealing with research ethics, moral foundations of research. These 2 points have already been covered by Dr. Geeta, so I will not go in much details. The third point, which is the main areas of focus in research ethics, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा discuss करूंगा. Then IPR in research, and then I will conclude finally. So I'm not going to take this first slide, and this second slide is also covered very nicely. That what are the examples of ethics? Many times we use this word ethics in a very loose manner, but ethics is something which is very, very hard to possess, very hard to, experience and practice. So it needs honesty, loyalty, integrity, respect, selfness, responsibility, transparency. Lots of points are there. It has to be there. It has to be followed when you are going to say that you are ethical in your research. So these points are not only needed for your research, these things are also needed for your day-to-day life. Until and unless you are an ethical persona, an ethical personality, you are not going to take these things exclusively for your research. So it has to be developed, it has to be inculcated within you only, so that later on, whenever you are doing some research, some projects, or any literary work, you can integrate all these points in your publications or your research outcomes. So it's very important to understand the examples of research ethics. Now, see, why should we consider this research ethics? Many questions are arises that why should we should take research ethics in consideration. So now we can see that lots of provisions are there when penalty is being imposed by institutions and various organizations. So it's not because of the penalty or because of the punishment we should follow this research ethics. Research ethics is to be followed because we have to trust that research. If we are not following the research ethics, the outcome of any research or any project or any literary engagement will be means people will not be able to trust. So to ensure that the public can trust the research, it has to be ethical. For an example, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दूं कि अभी कोविड-19 सिचुएशन है और इन केस इतनी सारी वैक्सीन्स आ रही हैं और उस वैक्सीन्स को बनाने में अगर हम लोग ने एथिकल कंपोनेंट पे अगर ध्यान नहीं दिया या एथिकल जो भी हमारे इश्यूज हैं उसको हमने एड्रेस नहीं किया, उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, उसमें हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की,
या जो जितने भी हमने पास के एक्सपीरियंसेस या पास का नॉलेज था उसको इंटीग्रेट करके अगर हम कुछ बना के लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक वैक्सीन बन गई, अगर वो वैक्सीन पे अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है, जनरल पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है, देन इट इज गोइंग टू बी फेल्ड। तो ये एक, जब तक हमारा एक फेथ बना हुआ है कि जो भी रिसर्च हो रहे हैं या जो भी आउटकम्स आ रहे हैं हमारे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स के, they are going to be very useful, they are going to be very beneficial, and well, it's going to contribute in a very significant manner to the society, for the welfare of society, well-being of society, तब तक हम उसको तब तब तक हम उस रिसर्च एथिक्स को जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक वो फाइनल आउटकम पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस साइंटिफिक नॉलेज की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए भी रिसर्च एथिक्स बहुत जरूरी है। सो इट्स नॉट, इट्स द नीड ऑफ आवर एंड इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, इट्स नॉट अ चॉइस। ये चॉइस नहीं है रिसर्च एथिक्स, जो भी रिसर्च कर रहा है उसको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, जो भी रिसर्च स्टैंडर्ड्स है इट हैज टू बी फॉलोड। ऐसा नहीं है कि चॉइस है। अगर आप चॉइस लेके आते हैं या फिर आप रिसर्च एथिक्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं रिसर्च में, तो यू आर नॉट वेलकम हियर। Don't join this academic institution, research institutions if you are not going to follow research ethics. So you have to take the pain, you have to do lots of work. As ma'am said that writing a page is so difficult, and you just write a page, lots of plagiarism issues will emerge. So you have to take pain if you want to come in research and academics. You have to work hard, you have to learn lots of things. Yes, now things are little easy with Mendeley and this electronic tools, but still the basics, the spirit has to be learned, right? So main areas of focus in research ethics is I will very briefly discuss that what are the major areas of focus in research ethics. So first is research misconduct. So avoid falsification, fabrication, and plagiarism. Again, the same issue that we have to take research in a very integrated manner. We have to avoid falsification. हमें false information नहीं देनी है, हमें fabrication नहीं करना है, हमें plagiarism नहीं करना है, किसी और के statement को, किसी और के information को अपना information बना के नहीं देना है कि ये मैं इस चीज को ओन करता हूँ। सो एंड जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स को आपको फैब्रिकेट नहीं करना है। व्हाटएवर इज देयर, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, इट इज आल्सो अ रिजल्ट that will show some ways or that will lead to some further research, but that result is result. You don't have the right to fabricate that result. So plagiarism is already being discussed. So research misconduct is not welcomed and it is not permitted in research studies, right? Now research collaboration issues. So now in today's world we see that lots of collaboration issues, lot of collaborating institutes are collaborating, and this because of the multidisciplinary approach. Now lots of institute at national level, regional level, and local level, they are collaborating. And they are coming out with lots of research papers and paper presentations, and lots of academic output is coming out. So in many times we see there is a conflict, that who will be the first author, who will be the second author, who will be the lead institute, who will be the subordinate institute. So before joining MOU or before collaborating with each other, we have to fix that roles. We have to fix our rules, that what role has to be taken care of by which institute, so that the ownership, management, authorship of any research project or any research is maintained, right? Next is a peer review. This is a powerful tool for excellence. Peer review, like in India and many global south countries, developing countries, and we can say least developing countries, this peer review process is very poor. Many predatory journals are there. We don't go for this peer reviewing. Peer reviewing process is a process for which makes our articles or academic output more meaningful, more justifiable, and after review your work is more refined. So but the poor journals, or you can say predatory journals, they don't do this
peer review in a very meaningful manner. So now you see, you can check the UGC website. There are lots of predatory journals. So try avoid publishing in those journals. So peer review एक बहुत अच्छा process है जो कि research ethics में हमें maintain करना है. Nowadays we have another issues of APC, article processing charges. So if you want to publish your article, and if you want to keep it free in academic domain, you have to pay some fee, academic article processing fee. So that is very difficult, especially in the developing countries and poor countries where purchasing power parity or purchasing power of the people is not that good. So in that case also, now lots of collaboration is taking place. Suppose that I am working, but I am not in a position to pay the APC. So what will happen? I will collaborate with some institution who have some publication funding and also in collaboration we will publish. But that is not ethical. Okay, the collaborating institute might not have worked on that particular research article or on that project, but just to get it published, to get my work published, I am getting collaboration. So that is also not a very ethical practice. Now next is conflict of interest, publication practice, and responsible authorship. Again, the same thing that if 3 or 4 joint authors are there in any publication or any research, there should not be any conflict of interest. We have to decide in very first instance that what is the role, what role each and every individual is going to play during that research period. So that is also very important. Next is disclose of funding sources. Like we get lots of fundings from various institutions. Like in India, we have DBT, DST, ICSSR, UGC. They provide lots of funding opportunities, and we get fundings also. But whenever we are going to publish or whenever we are going to present the work, and if the work is from that funding project, we have to give the proper source, that how much from which institutions we have received the funding, either for the publication, either for the research grant and all. Next is animal subject research. This is also very important in biomedical and medical science. So you have to be very cordial if you are dealing with the animals and all. So it's not only that humans are supreme and humans play a pivotal role in society, all have equal roles. So you have to be very kind and very, sensitive towards animal subject research also. And then next is human subject research. Whatever we are going to publish, whatever we are going to, suppose that I have gone to a research area to get some information in say Himalayas. So whatever information I am getting, if I want to publish it, I have to get the consent of that particular society or of that particular community. That see, I'm going to take this interview, this questionnaire, this focus group discussion, and I'm going to use this information for this purpose. So I have to make them clear. I have to take the consent from them before publishing it, before sharing it with research community. So it's very important, and we have to be very balanced in our behavior also. Researcher behavior is also very important. Suppose that you are going to interact with a tribe, or you can say a tribal area which are very remote tribe. They are not very well connected with your mainland and this technological people. So what you have to do, you have to behave the way they are. You cannot go like you cannot go and ask questions which is not true for them, which hurts their sentiments. And lots of other behavioral issues are also related. Like one case was reported, like one photographer from America, he clicked the photo of Jarwa tribe. Jarwa tribe, they live in Andaman and Nicobar Island. वहां गया वो, और during his visit to Andaman and Nicobar Island, उसने, और Jarwa tribe, they are still a primitive tribe. They live in naked stage. Still they are in a very primitive stage. उसने फोटो खींची और उसको जाके without the consent of that particular tribe या वहाँ पे जो लोग संरक्षक उसके पैटर्न थे, उनके बिना उसको
flash कर दिया, उसको flaunt कर दिया, and he was criticized for that. So without consent, and your behavior should be very appropriate when you are doing research. Now, then protect intellectual property right, that I am going to discuss in the next section. Social and environmental responsibility is also very important. So wherever you are conducting research, it's your responsibility that the environment and society and environment, they should not get any harm. You are doing it for the betterment of environment and society. Your research is going to promote harmony and environmental conservation. So it should not be reversed. It should not create any social conflict. Your statement or your action should not create any conflict within the society. So such responsibilities are very much attached when you are doing research and ethics, research ethics. Power dynamics, this is very common, and most of the time we see that power dynamics is involved in, suppose that I am working with my mentor, or my students are working under me and they are working hard. All they have done, they have conducted, they have collected the data, they have interpreted the data, they have find out the discussion and conclusion, everything. And being the supervisor, I will say, no, I will be the first author. Because I am your supervisor, I am not going to sign on your degree and dissertation, on your assignment. So that has to be addressed. You have to be logical. You have to be governed by the research ethics. It should not be the practice. So proper weightage has to be given to the researcher, and those who have contributed, proper weightage should be assigned to each and every contributors in the research. Next is institutional monitoring. As already said by Dr. Geeta, that we have UGC has come out with the guidelines in 2018. Now there are punishment, there are some issues which has to be, if you are going for plagiarism, if you are doing some unethical research, then you will be punished in some or other manner. And institutional monitoring should be there. Each and every college, university should have one cell, so that they can monitor at their own level whatever you are publishing, what your faculty members are publishing, because it is going to damage the image of that particular institution. So it has to be related with institutional monitoring. So most of the colleges and universities have a research cell, research and innovation cell. So through that, we can do this activity. We can monitor that what kind of publication is being out from that particular institution. So ethical governance is also UGC, CSIR, ICMR, DBT. They are the watchdog bodies. They are now having, they are monitoring lots of developments and lots of what's going on research front. So this is all about this research ethics. And see, I have one example. Example one. See, students are required to prepare a research proposal during their undergraduate program. बच्चों को undergraduate program में BA में, मान लो BA, BCom या BSc में एक research project बनाना है, और कोई XYZ ने एक idea develop किया है. XYZ developed the idea for his project and discuss with a friend. अपने दोस्त के साथ discuss करता है, और कुछ महीनों बाद, several months later, he found that his idea had been submitted as a research proposal by his friend without his knowledge. अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, उसके फ्रेंड ने कुछ महीने बाद सेम आइडिया को एक रिसर्च प्रपोजल बना के विदाउट उसके नॉलेज उसको पोर्ट्रे कर दिया. व्हाट दिस मीन? दिस इज like unethical. This is unethical as failure to give credit to the person whose ideas it is. जिसका आइडिया है उसको आपको क्रेडिट देना है. ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसका इंटेंजिबल राइट है, ये उसका आइडिया है. You cannot copy the idea. It's not only about the text, it's also about the idea. You cannot copy the idea. If you're copying the idea, you have to take consent. Either you have to give the proper credit and citation to that particular book or person, right? So this leads to plagiarism, right? And and before doing all this kind of activity, you should discuss with your co-author, right?
And this is the second example. You can see that four friends decide to work together on a research project during the vacation, right? One of them went abroad during the vacation and did not contribute to the research. The friends include all four names in presentation made at scientific congress. So this is also a kind of plagiarism. It's also a kind of not an ethical practice. So only three have worked. So the one who has left, who has not contributed, should not be, his name should not be cited as author. So it is also an unethical practice. So you can see that lots of examples and lots of instances are there where you can identify each and every one. The rules are so fine that you have to be very careful, otherwise you will be doing some or other things. You are plagiarizing your research or whatever you are doing. So it's a very thin line, and you have to be very cautious. You have to be very well informed that what is all about the plagiarism, right? Now let's move to IPR. So it's already late. I will not go in greater details. Just we'll discuss what kind of IPR we are having. This intellectual property right is very buzzword, highly you can say it's umbrella term and highly cited word. Most of the people, most of the academic research, they are using this intellectual property right thing. So what this mean actually? So this IPR were essentially recognized and accepted worldwide due to some very important reasons. Why this? Why people are talking about IPR? IPR. Everyone is talking about IPR, right? So why? And this worldwide, there's acceptance of IPR. So why we have accepted this? Because to provide an incentive to individual for new creations. If you have invented something, if you have invented something intangible, okay, and so to give you the incentive, to give you reward, it has to be recognized, right? Next is to accord due recognition to the creators and inventors. Again, the same point. It's about recognition to creators and inventors, those who have created any invention or come out with any good innovation. So that that recognition should be there. And the third is to ensure material reward for intellectual property, to give some kind of prize money or to encourage research and to encourage inventions and innovativeness. It is also rewarded in a material form. And the last is to make available genuine and original products. Okay, so predatory and what you can say, the copy things are very much in fashion today. You see, you will find the copy of each and everything. Each and everything is being copied, and the original, it looks like the original one, but that is not the original. So such kind of ethical issues and such kind of practices has to be banned. Someone has invented, someone has invested lots of time and money to invent anything, any item or any idea, and you are just not respecting that particular idea or vision. That is not ethical. So next, this is like types of IPR. You can see there are various types of IPR. Patents are there, trademarks, industrial designs, plant varieties, copyrights, geographical indicators, design of integrated circle, confidential information. So lots of this IPR can be divided into various types, and all have different role and registration process. So we'll see that in this slide we can see that what is the nature of intellectual property, right?
So before dealing one by one, we have to see that what kind of nature of intellectual property right is. It's a creation of human mind. It's a very intellectual activity. It's a creation of human mind, and it's an intangible property. It cannot be. It's not tangible. It cannot be touched. It comes from the idea. An idea, after idea, it is executed, and it goes to, after several corrections and several reviews, it goes to industry, and from industry it reaches to common people, right? So initially it's the intangible property, and it's a creation of human mind. Keep it in your mind that you can also come up with genuine and noble idea, new ideas, which you can go for registration under different acts. See what kind of inventions you are planning to do, or if you have any idea, you can get it registered from on your name, or for an individual, or for any company or community, right? So this IPR, this exclusive right is given to that particular person or community, and it is time bound. Like many inventions are there that is time bound, that is some are for 20 years, some are for 100 years, some are for 50 years, some are from like till death. You can retain the IPR of any product or any idea. And it is also territorial, means that if any product or any idea which is under IPR in India, it may not be in US, it may not be the in the IPR regime. So territorialness is also very important. कोई भी चीज यहाँ पे IPR में आती हो सकता है पाकिस्तान में ना आती हो, बांग्लादेश में ना आती हो. तो अलग अलग टेरिटरी में, अलग अलग नेशंस में अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं. कुछ इंटरनेशनल बॉडीज है हमारे पास जो कि IPR को रिव्यू करती हैं, उसको गवर्न करती हैं, या फिर कोई भी इशू अराइज होता है तो उस पर एक्शंस लेती हैं. तो इस तरह का नेचर है इसका. अगर डेफिनेशन की बात करें तो intellectual property shall include the rights relating to literary, artistic, and scientific works, performances of performing artists, phonograms and broadcast, inventions in all the fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protections against unfair competition, and all the other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, and artistic field. So whatever I'm discussing in my previous slides is same only, but it has been kept in a very nice and very arranged manner, that how, what kind of intellectual property can be listed. So it may be literary, it may be scientific, it may be industrial, it may be artistic. So whatever is new and whatever is not, whatever is registered. See, if you are coming out with an idea, it has to be registered. Until and unless you register it, it is not your IPR. It's not your intellectual property. You for making it in IPR, you have to register it in the concerned agencies. So for India, we have lots of IPR offices. Almost all the big cities, metropolitan cities have offices there. So these are the few international treaties on this IPR. So first, it started in 1883. See, it was not like that it started in 1883. I will give you one small story of this, not a story, it's a true incident. So ऐसा है कि Western Ghat, you might be aware of the Western Ghat, जो हमारा अरब सागर के पास जो वेस्टर्न घाट है, which is also known as hotspot region. तो वहाँ पे बाबा बूदन हिल्स है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, और they have a very fine coffee, one of the best coffee of India, and you can say in world also it has a name. So what happened, Baba Budan, he traveled to Makkah long back.
he traveled to Makkah, and from Makkah he went to Yemen, and from Yemen he bought coffee beans from there, the saplings of coffee in his कमंडल he brought, and वो भी चोरी से लेके आए, क्योंकि उस समय भी नियम थे, उस समय भी कानून था, अगर वो वहां से अगर पकड़े जाते तो हो सकता है कि उनको पनिशमेंट होती या क्या होता, बट वो किसी तरह से लेके आए. देन ही प्लांटेड दैट इन बाबा बुदन हिल्स ऑफ Western Ghat, and now you see that whole hill is named after Baba Budan, and it is nearby the Kurg district in Mysore. So you can see, तो उस समय भी इस तरह के प्रोटेक्शंस थे राइट्स के या किसी भी प्लांट के. ऐसा नहीं था कि पहले प्रोटेक्शन नहीं था या 1883 में ऑल ऑफ द सडन. ये कुछ साइंटिफिक और नई चीजें हैं जो कि हमने रिकॉग्नाइज किया और एक उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डाला है. तो ये 1883 में पेरिस कन्वेंशन से शुरू होता है. देन वी हैव another convention of literary and artistic work in 1886. Then International Union for New Varieties of Plants, UPOF, in various years, 61, 72, 78, 91. Then Convention on Biodiversity, 1992, very important. Agreement on trade-related aspects of intellectual property right, which came into 1994, is also very important with respect to this intellectual property right. Then Internet Treaties in 1998, and recent developments are also there. Recently, lots of addition has been done, lots of changes has been done in order to protect the intellectual property of individual and community, right? So now see the types which I have shown the slide earlier. So patents. So first is patent. Patent is what? It's an invention. It may be of product, processes, materials, compositions. It can be a technical solution. It can be a solution also of any problem. So patents are very important. And if you have any product, you have invented any product, or you have any solution to any problem, you can get it patented. But it should not be registered earlier, right? So it has lots of supervision and lots of it's a very rigorous exercise. Whatever you are submitting, it has to be proved. It has to be come out in a very magnificent manner, and it can also take shape from it also come out as a helpful activity in welfare of the society. Should not be like and lots of ethical issues, all the ethical issues which I have already discussed, that it should follow all the ethical guidelines also, right? Industrial designs, so lots of industrial designs are also coming out. So external features appealing to the eye, new shape, pattern, configuration, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल डिजाइन में डिफरेंट तरह के शेप्स हैं. अगर आपने कोई मशीन बनाई है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको आपने पर्टिकुलर शेप दिया है, तो दैट शेप यू कैन get it registered, right? Trademarks are there. Lots of trademarks are available. Word, name, logo, label, monogram, slogan. जैसे स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो किसी का स्लोगन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. LIC का स्लोगन है जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी. तो ये जब तक LIC है उसने उसको रजिस्टर्ड किया, आप उसको यूज नहीं कर सकते. तो ये ट्रेडमार्क्स हैं. कुछ लोगोज है, जैसे मान लो कि गाड़ी का लोगो होता है, कार में हुंडई है, होंडा है, फॉक्सवैगन है, बहुत सारे ऐसे कार्स हैं, सबका अपना लोगो होता है, साइंस होता है, सिंबल्स होता है. तो इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं. तो ट्रेडमार्क्स आर देयर. Copyright issue is already being discussed by Dr. Geeta. Copyright आपका है किसी चीज, आपका आर्टिस्टिक, लिटरेरी या कोई भी ड्रामेटिक क्रिएशंस है, उसको आप कॉपीराइट के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं. उसको कोई भी आपके परमिशन के बिना, आपके कंसेंट के बिना उसको यूज नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता. और अगर कोई यूज भी कर रहा है तो प्रॉपर साइटेशंस, प्रॉपर रेफरेंस हैज टू बी गिवन, राइट? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम या हैबिटेट में होती हैं. जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अल्फांसो आम, दैट इज वेरी लोकलाइज्ड इन महाराष्ट्र. बासमती राइस, उसको हमने देहरादून का बासमती राइस, उसको हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की तरह उसको हमने इसको फिक्स किया हुआ है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के चलते वहां पे होती है. अल्फांसो और कहीं नहीं हो सकता, वहां पे इस तरह का
सी वेव्स आती हैं और जो वहाँ पे इस तरह की ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे इस तरह का सॉइल है, वहाँ पे इस तरह का कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस है कि वो चीज़ वहीं पे होती है, हर जगह नहीं हो सकती है, तो वो वहाँ का एक पैक्युलरिटी है, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ हो रही है, तो उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं विद इन दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड सीक्रेट्स, बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जो आप बताना नहीं चाहते, बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रेड सीक्रेट्स रखती है, उसको भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एंड दिस प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, बहुत सारा रिसर्च होता है ICAR से लेके बहुत सारे इंडिविजुअल और थ्रू आउट वर्ल्ड, बहुत सारा, खास करके जब से हमारा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे क्रॉप वेराइटीज, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, नए नए प्लांट को हम हाइब्रिड प्लांट्स, उसको हम लोग लेके आ रहे हैं फॉर द फूड सिक्योरिटी, टू मीट द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो उसको भी बहुत सारे कंपनीज या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या आप इंडिविजुअल हैं, अगर कुछ आप लेके आए हैं हाइब्रिड कोई चीज ऐसी जो कि बहुत अच्छी है, तो उसको भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं इसके थ्रू। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, they gives you a kind of confidence and right that you do whatever you are doing and it is very logical and very good for society, you can register it with your name। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनका अलग अलग टाइम पीरियड है, कोई 100 years के लिए कोई होता है, कोई 30 years के लिए होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू deal and discuss all those because it's a very vast topic, the whole day can be spent on this IPR। सो कुछ लॉज हैं जो कि इंडिया में एक्टिव हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो जो IPR के जो कुछ लॉज है, जैसे फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास है। यू कैन सी पेटेंट एक्ट 1970 में आया, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो यू कैन सी लॉट्स ऑफ एक्ट्स आर देयर, और दिस एक्ट मींस they are giving you a kind of security, right? So whatever inventions or whatever new ideas you have, it will be duly respected and it will be duly protected by government of India and international bodies. You just have to work hard, yeah, and you have to come out with good and new inventions which is useful for society, which can solve the problem of our planet, either is environmental, social, or economical. So this is all about my lecture. So there was a time paucity, so I could not cover, lots of things were there in my mind, so I wanted to cover, but because of the time constraint, I'm just stopping myself here. So thank you all for patience hearing. Thanks. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. So adhering to the time and giving us a very crisp and very concise way to understand these ethics and IPR. Sir, we do have questions from this topic, but as what ma'am has suggested, we'll take up in tomorrow's session in an elaborate way. So yeah, sure. I can take the question. We can record it. You just take the questions. We can answer in the final conclusion. Yes, sir. I have noted down the questions, whatever have been there in the chat window, and we'll definitely take up in tomorrow's lecture. And apart from these questions also, if any one of you have any question from any resource person from the last 3 days and even tomorrow, you are most welcome. All your questions, आपके questions हम कल दोबारा और डिटेल में ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कल माइक ऑन करके अनम्यूट करके भी वहां पे तुरंत भी पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही जिन्होंने डाला है चैट विंडो में वो ही पूछे जाएंगे। उनके अलावा भी जो भी सवाल हमारे पास आएंगे, हम उनको अपने तरफ से पूरी तरह से कल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Before we move ahead and wind up today's session, there are few announcements. Number one, the feedback questionnaire for today will be shared by you with you via mail. जिस मेल से आपको कल के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसी से आज का डे 3 का क्वेश्चनेयर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक कल की क्लास के लिए। Actually, Shilpa, can I just intervene for a minute? Yes, sure, ma'am. Yes, please tell all the participants जिनको भी अगर कल कोई फीडबैक देना है और they want to say something, तो वो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दे
या वो सुनीता, डॉक्टर सुनीता को या आपको किसी को भी मेल करते कि what they want to say, so they will give in some chance. Okay? ड्राइवर वो एक साथ नहीं कर सकती। Am I audible to you? Yes, ma'am. ma'am. Yes, you are ma'am. audible. तो प्लीज किसी भी पार्टिसिपेंट्स को, किसी टीचर को जो हमारे पार्टनर कॉलेज है, आई वुड लाइक कि हर एक कॉलेज, 3 कॉलेजेस है, तो उनसे कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव से फ्यू वर्ड्स आफ्टर वी फिनिश आवर लेक्चर टुमारो। एंड द सेकंड थिंग इज, आई थिंक कल टुमारो प्लीज रिमेंबर टू मेंशन देम कि यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक यूजीसी के अंदर जर्नल का नाम होना चाहिए फॉर पब्लिकेशन, दैट वी हैव टू टेल देम, एंड प्लस उसका इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए। तो प्लीज जो डॉक्टर सुनीता, आई थिंक प्लीज यू टेक एंड क्लियरली टेल देम टुमारो इन योर लेक्चर। ओके, Sure, ma'am. Sure. thank you so much. Thank you, Prabhu. It was you and Geeta really had a wonderful session, and I'm very proud of that. I hope our participants, they would have liked it. Thank you. Over to you, Shilpa. You can say whatever you want. जो मैम अभी कह रहे हैं, मुझे उसी बारे में एक अनाउंसमेंट करनी थी कि हमारी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि अगर वो इस जो ये 4-day वर्कशॉप है उसके रिगार्डिंग कोई फीडबैक अगर देना चाहते हैं, तो चाहे वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में आप अपना एक शॉर्ट वीडियो अपने नाम के साथ, अपने कॉलेज के नाम के साथ एक शॉर्ट वीडियो बना के हमें मेल कर सकते हैं उसी मेल आईडी पे जहाँ से आपको लिंक मिल रहा है, या फिर कल जो वैलिडिटी सेशन होगा हमारा 4th लेक्चर खत्म होने के बाद, उस वक्त भी अगर आप बोल के अपना एक्सपीरियंस और आपका जो भी फीडबैक है वो शेयर अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। और जो अगर बोलना चाहते हैं, अगर आप अभी हमें नाम दे दें तो हमारे लिए कल उसको थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाएगा, बट इवन आफ्टर दैट ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। और तीनों कॉलेजेस से, जैसे कि मैम ने मेंशन करा है, प्रोफेसर रश्मि ने, कि प्लीज वी वुड लाइक कि हर कॉलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर अपना फीडबैक दें, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म से आप दे दीजिए या फिर आप कल हमारे वैलिडिटी सेशन में जरूर बोलें। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल, and link has already been shared, and questionnaire will be sent again by a mail. Am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. So what I was saying कि जो मैम ने अभी प्रोफेसर रश्मि ने बोला कि हमें फीडबैक स्टूडेंट्स का चाहिए, टीचर्स का चाहिए, सारे पार्टिसिपेंट्स का चाहिए, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कल के फीडबैक सेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम बताते हुए, अगर आप इस वर्कशॉप के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपने सजेशन अगर देना चाहते हैं, तो वो आप प्लीज रिकॉर्ड करके हमें कल सुबह तक उसी मेल के जरिए भेज दीजिए जिससे आपको लिंक शेयर हुआ है, जिससे हम रोज मीटिंग का लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं। उसी मेल आईडी पे आप प्लीज भेजिए अपने वीडियोस। अगर आप कल बोलना चाहते हैं जब हमारा सेशन चल रहा होगा उसके जस्ट बाद, तो प्लीज अभी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट विंडो में अपने नाम दे दीजिए, ताकि हम कल आपका नाम अनाउंस कर सकें और उस वक्त आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंसेस और अपने सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकें। और जैसा कि मैम ने रिक्वेस्ट करा, तीनों कॉलेजेस से जरूर एक हमारे पास फीडबैक आए तो हमें वाकई बहुत मदद मिलेगी मैम इसको आगे और अच्छा बनाने में। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वी आर ऑल अवेलेबल टू यू। गरिमा मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं यही कहना चाह रही थी कि आज गीता रानी मैम ने और प्रबुद्ध कुमार जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एट लेफ्ट एंड बेड दे हैव एक्सप्लेन्ड देयर टॉपिक्स, और इतना अच्छे से एलिमिनेट किया है उसको, और बाइलिंगुअल होने की वजह से मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए इट वाज वेरी मच कनेक्टिंग, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं आज कहीं आई हूँ, फिर भी मैं अलग बैठ के उसको लगातार आप लोगों के साथ इसीलिए कि मैं मिस नहीं कर पा रही थी। इतना मैंने सब लोगों को बोला, यहाँ पे जितने लोग कि बहुत अच्छा आप चल रहा है, मैं उसको मिस करना नहीं चाहूंगी। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, बड़े बोरिंग कई बार होते थे, लेकिन वो उसको आप लोगों ने कट शॉर्ट करके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने उसको बताया है। थैंक यू गरिमा मैम। मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। यस मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ, both the speakers today have explained their topics at length and depth,
and they have connected with the audience very well. They have cited the examples also, and it was in a very elaborative way. And I think most of the students and the faculty members have been benefited with that. बहुत अच्छी वर्कशॉप चल रही है. मैं यही कहूंगी, कल फिर हम लोग अभी एक टॉपिक और बचता है और मैं बाद में भी आप लोगों को इसके बारे में फीडबैक दूंगी. मुझे लगता है हम लोग आगे भी कुछ चीजें कर सकते हैं. इट इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी और द डीएवी कॉलेज टू कोलैबोरेट विद द शिवाजी कॉलेज. थैंक यू डॉक्टर प्रभु, थैंक यू डॉक्टर गीता रानी जी, एंड थैंक यू. कल हमारे यहाँ से हो सकता है कुछ फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को और भी भेजेंगे ऑडियो, अपनी वीडियोस बनाकर, क्या बोल सकते हैं. डॉक्टर मंजू भी बोलेंगी आई थिंक. और मैं आप लोगों को यदि मेल भी कर सकते हैं उससे, यदि आप लोग आज चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो मेल से भी आप लोग भेज सकते हैं. जी बिल्कुल मैम, अपने बिल्कुल names? आप मेल से भी भेज सकते हैं अपने नाम और अपने वीडियो. बिल्कुल मैम, मेल के थ्रू भी इंटीमेट कर सकते हैं. गरिमा मैम म्यूट हो गए हैं. गरिमा मैम आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज. क्या सारे समय मेरा माइक म्यूटेड था? नहीं मैम, अभी माइक म्यूट हुआ है जब अभी आप बोलना चाह रहे हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दो स्टूडेंट्स कल भी उन्होंने डिस्टर्बेंस किया था, सेम स्टूडेंट्स, और आज भी वही स्टूडेंट्स. तो मैं यदि हमारे कॉलेज से हैं तो मैं भी पता करने की कोशिश करती हूँ. तो ये सब नहीं होना चाहिए. एक स्टूडेंट जो है उन्होंने कल भी किया था डिस्टर्ब, आज भी किया उन्होंने. बार बार अपना वीडियो ऑन करना और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है. स्टूडेंट्स की पार्ट ऑफ उसके, ऑडियंस की पार्ट पे, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है हमें. और आप लोगों का बहुत बहुत कॉपरेशन के लिए so many thanks to all of you. Now over to Dr. Shilpa. Thank you Garima ma'am. Ma'am, any other announcements, Rashmi ma'am, or can we conclude this? It's fine, Shilpa. We can conclude today's session, and we'll start by tomorrow from 3 onwards. And I think we do have some question sessions along with the routine slots which we have made, and we will be having the valedictory as well. So the participants may please be prepared if it is stretched a bit. We will try to be in limit within 2 hours, but अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो प्लीज हमारे साथ, बिकॉज ये आप ही के लिए है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टाइम थोड़ा सा आगे स्ट्रेच होगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि थोड़ा सा अगर आगे पीछे थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो प्लीज एक्सक्यूज अस, है ना. Sure, I think this is fine, Shilpa. We can conclude. ठीक है मैम. Thank you Sunita ma'am, and thank you Garima ma'am, thank you